over the years when CP happened and so many of these interventions happened, my boards happened, and finally when envisioning happened last year, we built this whole vision. So my vision is to enable ecosystems where individuals are empowered to create a right to win and achieve joyous growth. And I think these words sound familiar. Most of our visions have these things. So I just want to share a few of the ways in which I changed this. We've had a lot of laugh about how the situation was, and it was probably worse than this because there was nobody for me to laugh with. I'm glad I have this association right now and of people who can appreciate this, because still there are places where there are reading lists and people are reading this. So I'm glad about where I am today. I only have gratitude. How I am able to put this into practice. First of all, we have this template for the job description, right? From CEP, from the CEP notes, we have this template for the job description. हम लोग ने उसको एक और level आगे लेके जाके when I saw that in 2020 and then I started implementing it, I realized that it needed a lot of tweaks. पहले तो went overboard, right? If you remember, there are multiple columns, and पहले column में there is a particular attribute that you have to check. दूसरे में है कि उसका weightage कितना है, और तीसरे में है कि इसको measure कैसे करेंगे. Over the years, after many iterations, we realized and we made changes to this. Now today, each and every employee of my 80 plus team members has a job description. This job description has one or two very, very crisp, like वो 10-15 words से ज़्यादा नहीं होता है उसका description. They have a very crisp KRA which is mentioned. It's a KPI which is mentioned, key performance indicator, which is mentioned. Like I, for so many years, for 14 years, have never had my own KRAs and KPIs. But even I have one now, and it is clear and it is very much measurable. So anybody in the company can know as to how I am performing vis-a-vis my KRs and KPIs. I will give you a practical example. For instance, my HR, the HR's role is to hire more people, or the recruiter's role is to hire more people. The HR's role is to say manage culture. Now, एक बाजू में मेरे पास ओपनिंग्स है, लेकिन वो एचआर को मैंने बोला हुआ है कि आपको मैनेज कल्चर भी करना है, आपको लोगों को भी मैनेज करना है. तो उसको सेंस ऑफ प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है कि मुझे पहले क्या करना है. यहाँ पर फायर लगा हुआ है, वी वांट टू हायर मोर पीपल, बट दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग एल्स. नाउ दिस टूल हैज हेल्प मी कम्युनिकेट टू देम द प्रायोरिटी, कि आप कितने रिगर से आपको क्या चीज को करना है. सो ओनली टू थिंग्स आर गिवन. एक चीज को 70% मार्क्स है, एक चीज को 30% मार्क है. उनको क्लियरली पता है कि बस अगर मेरे वीक में 40 घंटे है तो उसमें से 70% ऑफ द टाइम आई हैव टू डू दिस, 30% ऑफ द टाइम आई हैव टू डू दिस, एंड अकॉर्डिंगली 100 के अंदर से मार्क्स हैं. देयर इज अ सेपरेट शीट ऑफ अ विश लिस्ट. विश लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी इज द KRA. उसको क्या क्या करना चाहिए, है ना, वो मेरा विश लिस्ट है. मैंने उसको वो इनपुट मेजर्स के ऊपर मेजर करना छोड़ दिया है. आउटकम जो चाहिए वो ये 2 पॉइंट है. अगर आप ये आउटकम ला सकते हो, किसी भी तरह से ला सकते हो, तो मेरा काम हो गया. आई वुड नॉट कम बैक एंड टेल यू कि आज इतने लोगों को कॉल किया क्या, आज इतने लीड्स मिले क्या. वॉट एवर माइट बी योर लीडिंग पैरामीटर्स, आई डोंट लुक एट दोज लीडिंग पैरामीटर्स एट ऑल. आई प्योरली एंड सोलली लुक एट द लैगिंग पैरामीटर्स. अगर काम हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Today I'm happy to say that from that time of my marriage, when I was just an attendee, I earlier in this year I went to London for 3 weeks without a worry in my mind about what is happening to my business, because I know I have built a place with such wonderful people that it is in completely safe hands. पहले मुझे लगता था कि मैं बाहर निकला तो ये लोग पूरा जला डालेंगे इसको. मैंने एक ही ईमेल आईडी रखा था ताकि कोई कुछ डिलीवर ना कर दे. But I am so happy and so confident about my team today, that they are able to manage everything. In fact, while our reviews happen, in those reviews, the sales reviews are there, and I'm looking at sales numbers every fortnight, and I ask like, ये client कौन है? ये तो बहुत बड़ा number लग रहा है. आपने क्या projection किया है? लगता है एक zero add कर दिया उसमें आपने. Now, like he mentioned, I don't take the orders, so I don't know the clients.
राइट. सो कोई क्लाइंट का नाम है कि ये क्लाइंट के पास से इतना पैसा आने वाला है, एंड आई वाज लाइक रियली, इतना पैसा आने वाला है. तो अच्छा एक आधी बार आने वाला होगा, ये रोज का नहीं. नहीं सर, ये तो रिटेनर है, ये तो हर महीना आएगा. इतना पैसा हर महीना आएगा? हाँ सर. कौन लाया ये क्लाइंट? सर हम लोग लाए. तो अच्छा गुड, अच्छा किया. आई इन माई माइंड थिंकिंग इससे 50% बढ़ जाएगा मेरा सेल. मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया. इनफैक्ट टुडे सर द बेस्ट क्लाइंट्स दैट आई हैव, द मोस्ट प्रॉफिटेबल, द ones that are picking up all my extra bandwidth, वो पेइंग मी इन डॉलर्स, तो टीडीएस नहीं काट रहे. ये वाले क्लाइंट्स सारे मेरे टीम मेंबर्स लाए हुए हैं. एक एक मेजर बन गया है. प्लेसेस वेयर आई डोंट इंटरफियर ना, इट्स जस्ट ऑसम.